بسم الله الرحمن الرحيم. Chapter 3 Dynamics Numerical. Problem 3.1. 20 Newton force moves a body with an acceleration of 2 meters per second square. What is its mass? हमें दी हुई है फोर्स 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमने मास फाइंड करना है. इसके अंदर हम लगाएंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज न्यूटन सेकंड नाउ, and we will get the mass m is equal to f by a and mass is equal to 10 kg. Now problem 3.2. The weight of a body is 147 Newton. What is its mass? Weight is equal to 147 Newton. So gravitational acceleration जो होगी वो equal to होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मैस हमने फाइंड करना है, फॉर्मूला इधर लगेगा W इज इक्वल टू mg, और फिर जब हमने मैस फाइंड करना है तो वो हो जाएगा m इज इक्वल टू W by g and we will get mass is equal to 14.7 kg. Now problem 3.3. How much force is required to prevent the body of mass 10 kg from falling? मैस हमें दिया हुआ है 10 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फोर्स हमने फाइंड करनी, इधर लगेगा फोर्स इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन and we will get F is equal to ma and we will get force is equal to 100 Newton. Now problem 3.4. Find the acceleration produced by a force of 100 Newton in a mass of 50 kg. Mass हमें दिया है 50 kg, force हमें दी हुई है 100 Newton, acceleration हमने फाइंड करनी है. सेम फार्मूला लगाएंगे, F is equal to ma and in order to calculate the acceleration we will get A is equal to F by m and by putting the values of force and mass we will get acceleration is equal to 2 meter per second square. Now problem 3.5. The body has a weight of 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square? वेट हमें दिया हुआ है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन हमें दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमें दी हुई है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन. ये इक्वल होती है वेट के, लेकिन अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ वेट. वेट जो है वो बॉडी के डाउनवर्ड अप्लाई होता है और नॉर्मल फोर्स जो है वो इन द अपवर्ड डायरेक्शन होती है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमने फाइंड करनी है फोर्स. First we calculate mass by the formula of W is equal to mg and then we apply Newton's second law, that is F is equal to ma. So in order to calculate the mass we have equation m is equal to W by g. By putting the value of weight and g we will get mass is equal to 2 kg and now we have to calculate force and we have Newton's second law equation F is equal to ma. By putting the value of mass and acceleration we get force is equal to 4 Newton. Net force to move body upward is equal to normal reaction plus force producing acceleration. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी टोटल 20 न्यूटन जो नॉर्मल रिएक्शन है और प्लस 4 न्यूटन जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है फोर्स. नेट फोर्स हो जाएगी 24 न्यूटन. नाउ प्रॉब्लम 3.6. Two masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of string that passes over frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies. Mass of first body 52 kg, mass of second body m2 है 48 kg, gravitational acceleration होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमने acceleration फाइंड करनी है tension in the string. तो फार्मूला जो इधर लगेगा वो है is equal to m1 minus m2g by m1 plus m2. When the two bodies are moving vertically, then the acceleration of bodies is as A is equal to m1 minus m2g by m1 plus m2. And by putting all the values of masses and gravitational acceleration, we get acceleration is equal to 0.4 meter per second square. When the two bodies are moving vertically, then the tension in the string is as T is equal to 2 m1 m2g by m1 plus m2. By putting the values of m1 and m2 and gravitational acceleration
we get T is equal to 500 Newton. Now problem 3.7. Two masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table. 24 kg mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and acceleration in the bodies. Mass M1 हमें दिया है 24 kg और M2 हमें दिया है 26 kg. Gravitational acceleration 10 meter per second square. एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो है m1g by m1 plus m2. When one body is moving vertically and other body is moving horizontally, then the acceleration of the bodies is as a is equal to m1g by m1 plus m2. By putting the value of m1, m2 and g, we get acceleration is equal to 4.8 meter per second square. Now we have to calculate tension. When one body is moving vertically and the other body is moving horizontally, then the tension in the string is S. T is equal to m1 m2 g by m1 plus m2. By putting the values of m1, m2 and gravitational acceleration, we get T is equal to 125 Newton. Now problem 3.8. How much time is required to change 22 Newton momentum by a force of 20 Newton? Change in momentum हमें दिया हुआ है 22 न्यूटन, फोर्स हमें दी हुई है 20 न्यूटन और टाइम हमने फाइंड करना है. फॉर्मूला जो इधर लगेगा वो लगेगा जी एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. So by putting the value of force, the change in momentum, we get time is equal to 1.1 second. Now problem 3.9. How much is the force of friction between a wood block of mass 5 kg and the horizontal marble floor? The coefficient of friction between wood and marble is 0.6. Mass हमें दिया हुआ है 5 kg और coefficient of friction हमें दिया हुआ है 0.6. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमने फाइंड करनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs. फार्मूला जो इधर लगेगा वो लगेगा Fs इज इक्वल टू म्यू एस mg. By putting the value of mu s, mass and g, we get static force of friction is equal to 30 Newton. Now problem 3.10. How much centripetal force is needed to make a body of 0.5 kg to move in a circle of radius 50 cm with a speed of 3 meter per second? यहाँ पे हमें mass दिया हुआ है 0.5 kg, radius of circle हमें दिया हुआ है 50 cm, that is equal to 0.5 meter. Speed हमें दी हुई है 3 meter per second. अब हमने फाइंड करनी है FC, that is centripetal force. इसके अंदर जो फार्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे F is equal to mv square by r, and by putting all the values we get Fc, that is equal to 9 Newton. Now that's all about chapter 3 numericals. Thanks for watching my videos. Please like my videos and share my videos to the other friends, and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which will be uploaded in the future time. Take care. Allah Hafiz.